लास्ट पेपर है इस सेशन का, थर्ड पेपर जो है वो है टैक्सिंग रिमोट वर्क, पी रिस्क इन अ वर्क फ्रॉम एनीवेयर वर्ल्ड। स्पेशली ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी कोविड काल में, जहाँ घर बैठे हुए लोग लैपटॉप पे और इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू काम कर रहे थे। तो ऐसे केसेस में रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट हो रही है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे इनकम टैक्स में देखें तो फेसलेस असेसमेंट चलता है। आपको पता होगा कि पहले हम फिजिकल ऑफिस में जाके असेसमेंट कराते थे, आज फेसलेस असेसमेंट होता है। तो वैसे तो फेडरल सिस्टम होने का इंडिया को एक माना जाता है, लेकिन से अगर हम ये माने कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट हैं सबको इनकम टैक्स लगाने का पावर है। हमारी एक ऑफिस बिलासपुर में है, जीतू सर की फर्म उनकी बिलासपुर में है। उनके एक सीए वर्किंग थी, उनकी मैरिज होकर चली गई बेंगलोर। अब वो बेंगलोर से असेसमेंट के काम देखते हैं जीतू सर के। उनके क्लाइंट हैं दिल्ली के जिनका फेसलेस असेसमेंट चल रहा है। इनका हेडक्वार्टर है बिलासपुर, काम हो रहा है बेंगलोर से, क्लाइंट है दिल्ली के। तो रेवेन्यू किसको जाएगी? दिल्ली को जानी चाहिए, कर्नाटक को जानी चाहिए, छत्तीसगढ़ को जाना चाहिए। अगर सभी स्टेट को इनकम टैक्स लगाने का पावर होता तो रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट हो रही है, कंट्रोलिंग पॉइंट क्या है। तो इन सब पे रोशनी डालने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सुमेध तयशेटे जी मुंबई से। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ओवर टू यू सुमेध। Hi everyone, my name is Sumit Ashite. I am here from Mumbai. I am currently pursuing my articleship from BDO India in the corporate and international taxation domain. Personally, I have always been very curious about taxation as a subject when I studied for it during my CET immediate exams, and now that I am finally working in this field during my articleship. And it is that same curiosity that has led me to choose this topic of analyzing the key implications for remote work. So there is this very popular quote by Albert Einstein, the hardest thing in the world to understand is income tax. With this presentation of mine, I aim to do something that is made possible by only a few people, and that is to prove Einstein wrong. So let's understand why is there such a sudden popularity about remote work. First big reason is obviously the COVID-19 pandemic. The pandemic made the remote work a new norm in the business world. Also, rise of the gig economy and rapid technological improvements over the year were some of the other catalysts that led to remote work being a new norm in the business world. So while today's professionals are enjoying their livelihoods, earning their livelihoods and enjoying the sunset at some beach in Hawaii, thinking their life is going good, there are two words which might upset the vacation mood, and those are permanent establishment. So suppose this is the global working demographic, and these are the total working population of the globe, and they have an opportunity at their hands to work internationally and work remotely. Once again, let me call a plane for them. So see, around 48% of the total population agrees that they would rather work remotely and leverage this opportunity of traveling the world. Also, around 76% of the current remote workers agree that they would rather leave their jobs right now if this remote working flexibility of theirs is removed. Then, now how is the tax world catching up to this trend? Before we understand that, let us understand some of the basic fundamentals of international taxation. The three basic fundamentals of international taxation are source versus residence-based taxation, double taxation avoidance agreements, and model tax conventions. अभी टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा बाजू में रखते हैं और ये कंसेप्ट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी जस्ट T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट? सो समझो इंटरनेशनल टैक्स इज द T20 वर्ल्ड कप, एंड अभी कल इंडिया यूएसए का मैच था, तो यूएसए टीम इंडिया आई थी और वो इंडिया में मैच खेले वानखेड़े में, उन्होंने मैच खेला, इनकम कमाई। अभी इसमें टैक्स कौन लगाएगा? Indian government बोलेगी that they shall have the right to tax the income of the USA team as the match was played within the Indian borders. This is source-based taxation. As opposed to this, the USA government says that they shall have the right to tax the income of the USA team as they are a resident of their state. This is residence-based taxation. This often leads to the problem of double taxation on the same income. To avoid such conflict, there are double taxation avoidance agreements that the countries will sign to essentially grant a credit
to the taxpayers for the taxes that they have already paid in the other country. Then there are model tax conventions. Think of them as standardized templates that the countries all over the world will use to draft their DDAAs. There are two main model tax conventions. One is the OECD model and other is the UN model. Both of them have around 31 to 32 articles. They talk about the scope of the convention, taxation of different types of income, etc. And the countries all over the world will use these models to draft the DDAAs. And every DDAA would have an Article 5 which talks about permanent establishment. It defines permanent establishment. So essentially, if a entity constitutes a permanent establishment in a given country, then the profits are from that country, Hello? टीवी का डिस्प्ले ऑफ हो गई थी। हाँ, प्लीज कर। Okay. So essentially, if an entity constitutes a permanent establishment in a given country and the profits earned by them in that country would be attributable to their permanent establishment in that country, and thereby it will lead to tax implications further. So now that we have understood the fundamentals, let us understand what is the problem at hand. The problem is that the tax treaties which were drafted in the 20th century are unable to catch up with the borderless workforce of the 21st century. To tackle this problem, the OECD has proposed a change in its Model Tax Convention 2017. Before we understand what the change is, let us understand what is the prior position. So for this, we will be referring to the commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention 2017. It gives us two tests. First is the disposal test and other is the requirement test. Okay, again examples is समझते हैं. If an Indian company has an employee working in Germany remotely from his home office, so will such home office in Germany be considered as a permanent establishment of the Indian company? It depends. It depends on these two tests. First, we will check whether such home office was under the control and access of the enterprise of the Indian company, and whether the Indian company requires such home office to continue its business. Then also we have to consider the intermittent nature of the work. So the work just can't be preparatory or auxiliary in nature. It has to include some core business functions. So essentially, we can see that the old commentary was very vague. There was no bright line rule as such that said that this is permanent establishment, this is not. So different countries across the world made their own different interpretations. Let us just go across the globe and see what were the different judgments made by different countries. Once again, let me call my globe. So first, let's go to Denmark. Here, this Swedish company had a CEO who was working from his home in Denmark. It was held by the Danish tax authorities that as he had a decision-making authority, it led to a creation of commercial interest, and thereby a permanent establishment was constituted in Denmark, and thereby a fixed fee is constituted. Then let's go to Spain. यहाँ के टैक्स अथॉरिटीज ने ऐसा कंक्लूड किया था कि the home office of the employee is shall be under the access or control of the enterprise, then only a permanent establishment is constituted. Then let's go to Sweden. Again, यहाँ पे कोई केस तो नहीं है as such, but tax authorities ने एक statement issue किया था, wherein they have put the emphasis on whether the permanent establishment or working remotely provides a strategic business advantage to the enterprise. If it does, then a permanent establishment is constituted. Then let's come back to India. Here we have a case of Hyatt International. This is a very popular, very interesting case. In this, the Supreme Court has held that we shall again refer to the disposal test for determining whether they have a permanent establishment in India. So now that we have understood what were the different judgments, let us go and see what is the update is. So the OECD has proposed an update to its Model Tax Convention on November 18, 2025. This is basically the update. They have proposed to delete the prior requirements, and they have added this much more mechanical framework. Firstly, they have increased the scope of a relevant place. So not only a home office, but holiday rentals, hotels, and a relative's house is also included.
Then there is the 50% test and the commercial reason test. So if an employee is working from home for more than 50% of the time in any 12-month period, and if he satisfies the commercial reason test, then a fixed base permanent establishment is constituted. Then we have the personal preference carve-out. So if an employee just wants to work from home out of his own personal preference, that won't be covered here. Then there are temporary interruptions during this 12-month period. So supposedly the employee working from home had to visit his headquarters back in his home country for a short amount of time. That would not essentially restart the 12-month period. So the basic hand rule is if the employee is working for more than 50% of the time over a 12-month period in that location, and if there is a commercial reason for him to do so, then a fixed base permanent establishment is constituted. So let's see what we have understood with the help of some scenarios. I have pulled out some scenarios straight from the OECD commentary. Pehla scenario आपके computer screen पे. An employee lives in state S but works for a company in state R. They work from their home office in state S for 1 or 2 days a week, about 30% of the total working time throughout a 12-month period. The answer is no B, as the time spent working is less than 50%. So the 50% threshold is not exceeded here. Then, scenario B, an employee works from their home in state S for 80% of the time. Their roles involves regularly visiting local clients with state S to provide in-person services or sales support. Answer is P is created as the 50% threshold is exceeded and there is a commercial reason for him to be there. So thereby a P is constituted. Then, last scenario, an employee works almost exclusively more than 50% of the time from his home in state S. They provide virtual real-time technical support to customers in a time zone that is difficult for the head office in state R to cover. Answer is P is created as the 50% threshold is exceeded and there is a commercial reason. As being in that particular geographical region, it provides a strategic business advantage to the entity and thereby there is a commercial reason and a P is constituted. That's it. That concludes my presentation. I hope with this presentation of mine, I have made you guys understand the intricate workings of international taxation. And I know there are some CA intermediate students in the audience who are going to continue in their articleship. So I hope direct tax and international taxation seems fascinating to you and you choose this field. Thank you. Thank you, Sumit. अगर जजेस का या ऑडियंस से कोई क्वेश्चन हो सुमित से तो हम लेना चाहेंगे. Yes, sir. I also have a single question for this regarding to Bhaiya. Mic. Good morning, भैया. हाँ बोलिए. जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में से, तो मेरे को बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन आया कि जैसे कि क्या DTAA मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टैक्स रिलीफ है या टैक्स अवॉइडेंस के लिए एक लीगल टूल्स हो सकता है? So both aspects इसमें दिखते हैं. Essentially इसका डबल टैक्सेशन का अगर नाम से हम लोग जाए तो वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है. आप एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स ना पे करें, इसके लिए वो अग्रीमेंट मतलब टैक्स ट्रीटीज अपने को बनाई गई है. बट कुछ कंपनीज हैं जो इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दे या फिर ऐसा कुछ इंटरप्रेट कर देती है जिससे वो इनकम एस्केप कर सके. तो इसके लिए है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग गाइडलाइंस. उसमें बहुत कुछ है बट लाइक फिर भी somehow companies manage to work around the words and try to shift their profits to a much lower tax jurisdiction area and save all their taxes. That's it. थैंक यू. रिगार्डिंग वन समथिंग न्यू क्वेश्चन. तो जैसे हमारा भी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है और जो USA है डेवलप्ड है. Okay. तो उसके पास तो ये इसके लिए बेनिफिट है कि वो ऐसे करे तो उसको अवॉइड किया जा सकता है. बट जो हम जैसे इंडियंस कंट्री है वो डेवलपिंग टाइम है, तो इसके लिए जो कुछ ज़्यादा लॉसेस बियर करना पड़ सकता है. इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशंस. ओके, कंट्री के रिगार्डिंग सच इधर कुछ मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस यहाँ पे बात नहीं करता. एसेंशियली ये बात कर रहा है टैक्स पेयर्स के लिए. तो टैक्स पेयर्स अगर आपके है इंडियन कंपनीज में, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जस्ट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री वी ट्राई टू गिव सम एग्जेम्पशंस टू देम. लाइक हमने कैपिटल गेन्स पे कुछ एग्जेम्पशन दे दिया, ऐसा कुछ टैक्स ट्रीटीज में हम लोग ऐसा कुछ इंक्लूड करते हैं जिससे हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट आ सके. या फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट का जो अपना इनकम है उस पर हम लोगों ने टैक्सेशन कम कर दिया, उससे उनको रिलीफ मिलता है एंड इट एनकरेजेस देम टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री एंड दैट लीड्स टू आवर डेवलपमेंट. ठीक है, थैंक यू भैया.
एंड से अगर और कोई क्वेश्चन हो तो, अदरवाइज फिर हम जजेस से लेंगे। जजेस प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इशू को लेके डीटीए में कुछ डिफरेंट प्रोविजन है, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिफरेंट प्रोविजन है, तो क्या प्रिवेल करेगा? और दूसरा, अगर हमारा किसी कंट्री के साथ डीटीए नहीं है तो उस केस में क्या होगा, या क्या दोनों कंट्री में टैक्स देना होगा मुझे? सर, वेर इन केस वी हैव अ DTAA एंड जहाँ पे हमारे प्रोविजंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर DTAA आर डिफरेंट, बट एज पर सेक्शन 90 और 90A हम लोग वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जो भी हम ज़्यादा बेनिफिशियल है उस हिसाब से टैक्स इम्प्लीकेशन डिटरमाइन होंगे। एंड जहाँ पे हमारे पास कोई DTAA है ही नहीं, वहाँ पे हम लोग सेक्शन 91 को रिफर करेंगे जो हमें यूनिलैटरल रिलीफ देता है। तो हमारी कंट्री बेसिकली ऐसा देखती है कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कहाँ कम आ रहा है, मतलब इंडिया में आ रहा है या आपके फॉरेन कंट्री में आ रहा है। तो जो भी इफेक्टिव टैक्स रेट कम होगा उस हिसाब से आपको टैक्स इम्प्लीकेशन पड़ेगी एंड उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई कंट्री यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, लाइक अलास्का, फ्लोरिडा, ऐसी जगह पे हाउ दिस रिमोट वर्कर कैन क्रिएट टैक्स प्लेसेस? ओके सर, कुछ टैक्स हेवन्स डेफिनेटली है हमारे दुनिया में, लाइक जैसे कि मोनाको हो गया एंड देन मॉरिशस हो गया। दीज आर बेसिकली कंट्रीज जहाँ पे कुछ पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं। दुबई भी आता है इनमें। तो यहाँ पे कैसा है कि हमने इसीलिए OECD ने अभी जस्ट ये नया प्रपोजल लेके आया है नवंबर 25 में। अभी फिलहाल ये प्रपोज्ड ही है, बट वंस ये एक्सेप्ट हो जाता है देन दिस 50% थ्रेशोल्ड लिमिट एंड कमर्शियल रीजन टेस्ट अप्लाई होना चालू हो जाएगा एंड देन इट विल लीड टू कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीकेशंस। एंड एसेंशियली कैसा हो जाएगा कि आपका ऐसे एक एम्प्लॉई है, पर्टिकुलर एम्प्लॉई है या फिर कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉइज आपने डिफरेंट कंट्री में लगा के रखे एंड वो ये सब थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर देते हैं, तो उसके वजह से आपको कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीकेशन पड़ जाएगा। तो फॉर द कंपनी द कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीकेशन वुड ऑलवेज बी अ सीरियस इशू फॉर देम। दे वुड समहाउ ट्राई टू वर्क अराउंड द वे एंड ट्राई टू एटलीस्ट ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड ना करें, वो लोग इंश्योर करेंगे। तो अभी जैसे वो ज़्यादा चल रहा है पेपरों में भी, मीडिया में भी, दुबई को लेके कि प्रॉपर्टी परचेस करो या वो करो, बिजनेस करो और कोई टैक्स नहीं है। हाँ, तो हाउ टू कप अप फॉर दिस इंडिया गवर्नमेंट टू इफ एनीबडी रिमिट मनी फ्रॉम UAE? ओके, यहाँ पे सर ऐसे मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ एनकरेजिंग प्रोविजंस डेफिनेटली ला सकते हैं हमारे इनकम टैक्स में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाहर डेफिनेटली टैक्स हेवंस है, तो ऑब्वियसली माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास उतना अवेलेबल है नहीं। तो हम लोग कुछ एनकरेजिंग प्रोविजंस हमारे इनकम टैक्स में लेके आ सकते हैं जो एनकरेज करें कि आप इन्वेस्टर्स या फिर बिजनेसमैन आप इंडिया में ही रहे, आप इंडिया में ही बिजनेस अपना चलाते रहे, जस्ट दैट आप मतलब ऐसा कुछ प्रोविजन हम लोग ला सकते हैं जो आपको रेजिडेंस बेस्ड बेनिफिट दे सकता है। तो जो बेनिफिट आपको बाहर जाके नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज आप इंडिया के रेसिडेंट हो या फिर आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो इंडिया में है के पर ईयर, देन ओनली यू गेट दैट बेनिफिट। ऐसा कुछ हम लोग प्रोविजन अगर लेके आए तो हम लोग डेफिनेटली टैक्स पेयर्स को एनकरेज कर सकते हैं इंडिया में रहने के लिए एंड मेक देयर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हियर। अभी जो प्रपोजल अभी लाने वाला है, हाँ, तो अभी एग्जिस्टिंग में क्या पोजीशन है? एग्जिस्टिंग प्रोविजन मैंने जैसे पहले बताया, देयर आर द डिस्पोजल टेस्ट एंड दी रिक्वायरमेंट टेस्ट। तो इसमें सबसे लेटेस्ट केस लॉ जो मैंने दिखाया था इंडिया के लिए वो था हायट इंटरनेशनल का, वहाँ पे उन्होंने डिस्पोजल टेस्ट ही को ही रेफर किया था। ऑल्सो देयर आर अदर डिसीजन सच एज इन द केस ऑफ F1 का ट्रैक है उसका फिर उसको भी फिक्स बेस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने बोला था। देन अगेन मॉर्गन स्टैनली का एक केस है, फिर ई फंड्स IT सॉल्यूशंस का है। ये सब डिस्पोजल टेस्ट और रिक्वायरमेंट टेस्ट को ही प्रेफर करते हैं फिलहाल के लिए। देखते हैं अभी अगर ये अपडेट एक्सेप्ट हो जाता है तो देन वी हैव टू रिवाइज द जजमेंट्स। ओके, थैंक यू सुमेर। मैं जजेस से रिक्वेस्ट